welcome to Amrita Raichand, Chef and Beyond. It's Toddler Tuesday time and it's time for some yummy, tangy fish tacos. So are you ready? Let's make them. छोटे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, बड़े बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और ममास को भी बहुत अच्छा लगता है. So this is a 3-in-1 recipe, guys. Let's make it quickly. तो इसके लिए मैं ले रही हूँ किंग फिश, सुरमई. इसका फिले मैंने लिया है because हम tacos में जब डालेंगे तो we are going to use boneless pieces. So I'm just going to slice them into 3 nice pieces and then I'm going to season them with my special स्पाइस मिक्स विच इज़ अ मेक्सिकन मिक्स. तो इस स्पाइस मिक्स में पहले जाएगा नमक. इसे आप बना के ना अपने घर में एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए. कभी भी आपको मेक्सिकन खाने का मन हो, यू कैन जस्ट मेक इट. थोड़ी हल्दी गई है, सम धनिया पाउडर, सम जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स. सम paprika या रेड चिली पाउडर, सम ब्लैक पेपर पाउडर, and last but not the least, little bit of chili flakes. अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे and we're going to season this and also season our sauce that will go in the tacos. Okay, इसे जैसे मैंने कहा, you can just make it and keep it handy for whenever you want to make a nice Mexican dish. तो पहले हम अपने fish को season कर लेते हैं दोनों तरफ से इसके साथ. इसमें थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज कर लेंगे. अब इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे. एंड नाउ इट्स टाइम टू ग्रिल देम. ओके, लेट्स ऐड सम ऑयल टू आवर हॉट ग्रिल पैन. सो आई हैव अ नाइस ग्रिल पैन हियर विद दीज लाइंस. इससे क्या होता है कि इट गिव्स यू दोज मार्क्स, दोज ग्रिल मार्क्स. इफ यू डोंट हैव इट, नो प्रॉब्लम, आप रेगुलर पैन में भी इसको ग्रिल कर सकते हैं. Okay, now we're gonna turn it on the other side. The best part about fish is कि वो बहुत ही जल्दी पक जाता है. Overcook बिल्कुल नहीं करना चाहिए fish को, वरना वो रबरी और chewy हो जाता है and it's no fun at all. Alright, this looks beautifully done. Let's take them out. Lovely. And now let's get on with the sauce. उसके लिए हम लेंगे एक बोल और ये मैंने दही को हैंग करके रखा है. तो बेसिकली ये बहुत आसान है करना. You just have to hang regular curd. पूरे मसलिन के कपड़े में टांग दीजिए तो excess water निकल जाएगा. And what is remaining is nice thick and fresh hung curd. तो उसे एक बोल में हम डाल देंगे and we're going to season it with, yes, you guessed it right, with my yummy Mexican mix. So just generously mix it in. इसे हमें smooth और creamy बनाना है. We'll use a fork and a little lemon juice. So a little lemon juice goes in. So now what goes inside this? इसके साथ we're going to add a little dose of vegetables as well. So I have some grated carrots which I'm going to add to it. And some shredded cabbage. तो अगर बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे हल्का सा सौटे भी कर सकते हैं. But I like to add that little crunch to these tacos. So I have avoided that. And these are nice vegetables which when eaten raw are way more beneficial. Alright, तो ये हो गया. अब देखते हैं हमारा fish भी ठंडा हो गया. We're going to shred this out. So let's do that. Nice chunky pieces of fish. Looking great. Fish is done, sauce is ready, tacos are here. I've got some ready-made taco shells and I've got this lovely taco stand जिसमें हम final presentation करेंगे. All right? So first we are going to add a layer of lettuce leaves क्योंकि इसके अंदर जब हम बाकी की filling भरेंगे तो क्या करेगा ये lettuce is going to protect the tacos from getting soggy. Now we're going to add our yummy
tangy sauce full of vegetables which are nicely hidden inside them. Add the fish that we have grilled so beautifully to this. Alright, so this is done as a final garnish of some dhania or parsley. And we are good to go. And what is amazing about this recipe is कि इसकी जो prep है वो आप पहले से ही करके रख सकते हैं. Fish को grill करके रख सकते हैं, sauce को बना के fridge में रख सकते हैं. बच्चे आए, भूख लगी है, फटाफट assembly किया and you're good to go. So see how lovely this looks. इसी तरह का आप एक taco stand भी खरीद सकते हैं. And it just makes such a difference to the presentation. So I hope you like the recipe of these tangy fish tacos. Well, I love it, my son loves it, and I'm sure your child will love it too. So that's all for now, but don't forget to like, share and subscribe to Amrita Raichand, Chef and Beyond. I'll see you very soon. Bye.